Assalamu alaikum everybody. Today we will cover the art of narration, that is the direct and indirect speech. This lecture is equally important for the students of SSC and HSSC levels. I have divided this lecture into several parts, and this is the part 1 of the rules of changing a direct speech into an indirect speech. I shall use both English and Urdu as the medium to deliver my lecture for better understanding. So let's start. Direct speech. In a direct speech, we report or convey the message of the speaker in the exact words as spoken by him. For example, Asim says to Aisha, "I like clouds in the sky." If you note that this sentence has been divided into two parts. One part is inside the inverted commas, and in one part we can see two nouns, Asim and Aisha. डायरेक्ट स्पीच में दो पार्ट्स होते हैं, एक पार्ट इन्वर्टेड कॉमास के अंदर होता है और एक जो है वो इन्वर्टेड कॉमास के बाहर होता है. Now, what is the doer of an action? Sorry, who is the doer of an action? Who is the subject? Asim. Asim is the subject, right? And says, it is an action word, so it is a verb. And let's talk about the receiver of an action. The receiver of an action is Aisha. And this whole part of the sentence is a reporting speech, right? The one which is highlighted in yellow, this is the reporting speech. Now let's talk about another part of the sentence which is inside the inverted commas, which is now highlighted in green. This part of the sentence which is inside the inverted commas is a reported speech. So direct speech में उसको हम दो parts में divide कर सकते हैं, एक reporting speech और एक reported speech होती है. रिपोर्टेड स्पीच हमेशा इन्वर्टेड कॉमास के अंदर होगी और रिपोर्टिंग स्पीच जो है उसमें नाउन ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट हमें नजर आ जाएंगे. आगे चलते हैं जी, इनडायरेक्ट स्पीच के बारे में बात करते हैं. व्हाट इज एन इनडायरेक्ट स्पीच? इन एन इनडायरेक्ट स्पीच we report or convey the message of the speaker in our own words. सही हो गया. Asim says to Aisha, "I like clouds in the sky." This is not an example of an indirect speech. It is a direct speech. We can transform this direct speech into an indirect form. हम direct speech को indirect speech में convert कर सकते हैं, और कैसे convert करेंगे वो हम अभी देखते हैं. लेकिन उससे पहले आप मुझे बताइए कि ये जो direct speech है, इसमें ये जो part है जो मैंने अभी highlight किया है red से, this part is what? रिपोर्टिंग स्पीच. सही हो गया. ये माइंड में रखनी है बात, क्योंकि जब तक आपको रिपोर्टिंग स्पीच और रिपोर्टेड स्पीच में डिफरेंस नहीं पता चलेगा, आप रूल्स को सही से अंडरस्टैंड नहीं कर पाओगे. और ऐसा पार्ट जो इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर होता है, दिस पार्ट इज ए रिपोर्टेड स्पीच. It means that we are talking about a direct speech. Now let's change this direct speech into an indirect form. Indirect speech में inverted commas नहीं होंगे, और indirect speech में अभी mind में ये रख लें कि reporting speech और reported speech को combine करते हैं हम that से. लेकिन ये rules, ये जो that का connection है, that हर जगह use नहीं होगा. But for now, keep this thing in mind that we are required to use that after removing inverted commas. So, Asim says to Aisha that he likes clouds in the sky. अब देखिए बात वही है, लेकिन अब हमने अपने अल्फाज में प्रोनाउंस को चेंज करके इनडायरेक्ट स्पीच में मीनिंग तो वही है, बट अब हमने चेंज कर दिए, वर्ड्स चेंज कर दिए. सो आसिम सेज टू आयशा दैट ही लाइक्स क्लाउड्स इन द स्काई इज एन एग्जांपल ऑफ एन इनडायरेक्ट स्पीच, व्हाइल आसिम सेज टू आयशा I like clouds in the sky is an example of a direct speech. Let's move forward. If you want to change a direct speech into an indirect speech,
you are required to use that, but it is but you cannot use that always. That can not always be used while changing a direct speech to an indirect speech. For example, if we talk about an interrogative sentence, in interrogatives, in imperatives, right? In sentences like interrogative sentence or imperative sentence, we will not use that. हम जब भी डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करते हैं तो इन्वर्टेड कॉमास को रिमूव करते हैं। फर्स्ट रूल, कभी भी इन्वर्टेड कॉमास जो हैं वो इनडायरेक्ट स्पीच में आपने यूज़ नहीं करने। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, आपने अभी माइंड में ये रखें कि आपने जब इन्वर्टेड कॉमास को रिमूव करना है तो उसकी जगह आपने दैट लगाना है। लेकिन आगे जाके हमें ये पता चलेगा कि बहुत सारे ऐसे सेंटेंसेस हैं जिनमें आपने डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच को कंबाइन तो कर दिया, बट उसमें आपने दैट यूज़ नहीं करना। जैसे इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस हैं, इम्पेरेटिव्स हैं, सो हम उनके बारे में बाद में देखेंगे। लेकिन अभी माइंड में यही रखिएगा कि डायरेक्ट स्पीच को जब आप इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करोगे तो फिलहाल हमने दैट को यूज़ करना है। सिंपल सेंटेंसेस में जो असर्टिव अफर्मेटिव सेंटेंसेस होते हैं उनमें दैट यूज़ होता है। नाउ if you want to change a direct speech into an indirect speech, how many major changes are there? Change number 1, change of pronouns. अगर आपने डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करना है तो आपने प्रोनाउंस को चेंज करना होगा, और वो प्रोनाउंस कौन से होंगे? पर्सनल प्रोनाउंस से हम डील करेंगे, पर्सनल प्रोनाउंस। और ये बात माइंड में रखें कि जो चेंज आता है वो हमेशा रिपोर्टेड स्पीच में आता है, उस स्पीच में आता है जो इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर होगी। अभी हम 3 चेंजेस की बात करेंगे और वो तीनों के तीनों चेंजेस हमने रिपोर्टेड स्पीच में करने हैं, ना कि रिपोर्टिंग स्पीच में। सो अगर आपने डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करना है, आपने सबसे पहले इन्वर्टेड कॉमर्स को रिमूव करना है। सेकेंड पॉइंट है जी, आपने प्रोनाउंस का चेंज करना है। देन चेंज ऑफ टेंसेस, इसके बारे में अलग से लेक्चर है, इंशाल्लाह आई विल अपलोड दैट लेक्चर सून। और उसके बाद जी चेंज इन सर्टेन वर्ड्स मैं आपको बताऊंगा, थोड़ा सा आइडिया आपको होगा भी लेकिन मैं बता भी देता हूँ। जैसे वर्ड दिस है, इट विल बी चेंज्ड इनटू दैट, ठीक है जी। नाउ वर्ड जो है इट विल बी चेंज्ड इनटू देन। सो इस तरह के जो कुछ वर्ड्स होते हैं हमने इनको चेंज करना होता है, हम इसको भी डिटेल में कवर करेंगे। ओके जी, टू चेंज प्रोनाउंस, what you have to do is to figure out a subject and object from the reporting speech, right? And pronouns from the reported speech. अगर आपने प्रोनाउंस को चेंज करना है तो आपने रिपोर्टिंग स्पीच में से सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को ढूंढना है। रिपोर्टिंग स्पीच और रिपोर्टेड स्पीच में से आपने प्रोनाउंस को देखना है, क्योंकि हमने प्रोनाउंस को चेंज करना है और वो प्रोनाउंस जो हैं वो रिपोर्टेड स्पीच, द स्पीच विच इज़ इनसाइड द इन्वर्टेड कॉमर्स, उस स्पीच को कहते हैं, वहाँ पे हमने प्रोनाउंस को देखना है। लेकिन रिपोर्टेड स्पीच के प्रोनाउंस जो हैं वो चेंज कैसे होंगे? दे विल बी चेंज्ड in accordance with the subject and object of the reporting speech. For example, Asim says to Aisha. अब इसमें देखें, Asim has been highlighted into red and Aisha in blue. So Asim is the doer of an action and Aisha is the object of in this reporting speech. So we have figured out the subject and object in this reporting speech. The subject is Asim and object is Aisha. Now let's talk about a reported speech. Say for example, the reported speech is I am going to Lahore. Now the whole sentence is Asim says to Aisha, I am going to Lahore, where Asim is the subject, Aisha is the object, and I is the pronoun. So we are required to change this pronoun with respect to the subject or object of the reporting speech. We will see how. अच्छा, अब अगर मैं कहता हूँ आसिम says to आयशा की जगह मैं कह देता हूँ जी he says to her, comma, inverted commas, I am going. अच्छा, अब आप इसमें देखो कि although he and her are also pronouns,
but as these pronouns are the parts of a reporting speech, so we will say that he is the doer of an action, that is he is the subject, and her is the object of the reporting speech, right? And I am going, so there is just one pronoun, हमारे काम का जो pronoun है जिसको हमने change करना है वो just एक ही pronoun है I। ठीक हो गया। अब हम देखेंगे कि प्रोनाउंस को चेंज करना कैसे होता है, बट मैं एक दफ़ा रिपीट कर देता हूँ। रिपोर्टिंग स्पीच में आपने सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को देखना होता है, और वो सब्जेक्ट आपका प्रोनाउन भी हो सकता है, वो सब्जेक्ट आपका प्रॉपर नाउन भी हो सकता है। अच्छा, और रिपोर्टेड स्पीच में आपने प्रोनाउंस को स्टडी करना होता है। अच्छा जी, अब एक सेंटेंस है जी, ही हैज़ गॉन टू इस्लामाबाद, आई सेड टू आस्क हिम। सो प्लीज़ बेयर दिस थिंग इन माइंड के जो रिपोर्टिंग स्पीच है, इट इज़ नॉट अ रूल कि रिपोर्टिंग स्पीच पहले आएगी और रिपोर्टेड स्पीच बाद में आएगी। नो, नॉट एट ऑल। इवन HSSC लेवल में आपको नॉर्मली एक पैराग्राफ दिया होता है, और उस पैराग्राफ में काफ़ी ज़्यादा जो है ना डायरेक्ट स्पीच एक नहीं होती, बल्कि 4 to 5 डायरेक्ट स्पीचेस उसने ज्वाइन करके दी होती हैं। और उसमें नॉर्मली क्या होता है, आपका जो रिपोर्टेड स्पीच है वो पहले होती है और रिपोर्टिंग स्पीच बाद में होती है। सो द स्पीच विच इज़ इनसाइड इन्वर्टेड कॉमास, इट इज़ ऑलवेज अ रिपोर्टेड स्पीच। ठीक हो गया। सो इस केस में आप देखो कि ही हैज़ गॉन टू इस्लामाबाद, इट इज़ अ रिपोर्टेड स्पीच, and I said to ask him is a reporting speech, right? I said to ask him, it is a reporting speech. And where is the subject? Although I is a pronoun, but over here we will say that I is the subject and ask him is the object in this reporting speech. Now, where is the reported speech? Before telling you anything about the reported speech, please, yeah, fine, this is the reported speech. हमें पता है कि हमने reporting speech में subject और object को देखना होता है। प्लीज़ इस चीज़ को माइंड में रखें, आपने सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को पॉइंट आउट करना है रिपोर्टिंग स्पीच में, क्योंकि इसी की मदद से हमने रिपोर्टेड स्पीच के प्रोनाउंस को चेंज करना होगा, राइट। अच्छा जी, प्रोनाउंस कौन से होंगे रिपोर्टेड स्पीच के? पर्सनल प्रोनाउंस होंगे। नाउ व्हाट इज़ अ पर्सनल प्रोनाउन? हमें पता है पर्सनल प्रोनाउन के बारे में। इंशाल्लाह आई विल ट्राई टू अपलोड वीडियो इन विच आई विल डिस्कस ऑल द काइंड्स ऑफ प्रोनाउन। लेकिन अभी पर्सनल प्रोनाउन में देखें तो फर्स्ट पर्सन, सेकेंड एंड थर्ड पर्सन प्रोनाउन। फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन refers to all the pronouns which are associated with my own self, right? For example, I, me, my, we, or, है ना? These are all such pronouns are first person pronouns. Second person is the one who is present in front of you, you or your, जैसे तुम या तुम्हारा। अगर कोई इंसान आपके सामने होगा उसके लिए आप second person यूज करोगे। And what about the third person? Third person is the one who is not present in front of you. So if we are talking about a male gender, we will use he, and if you're talking about a female gender, we will use a pronoun she, and it is an impersonal pronoun, and they for both singular and plural, बेशक gender male है या female है, they use होगा और their भी use होगा। So we will see कैसे हम इनको use करते हैं, and you must have an idea about their, है ना? There is a difference between their, THERE, and THEIR. There is a demonstrative word, demonstrative, ठीक है जी, and there is a personal pronoun. There, THERE, it can be a demonstrative adjective or a demonstrative pronoun, but we cannot use THERE for persons, and THEIR is always used for persons. Okay ji. First example, she says, I like your painting. Now, who is the doer of an action? She is the doer of an action, that is, she is the subject, although she is a pronoun, but kyunke she is the part of reporting speech, so we will say that she is the doer of an action, she is the subject. I like your painting, I is the pronoun, your is also a pronoun. Now, I is the first person and your is the second person pronoun. Right, now let's talk about the second sentence. She says to Asim, she will listen to me. Now, what is the difference in the reporting speech? देखिए, she says, we don't know she says to whom, है ना? Object is missing over here. In the first sentence, there is no, it seems that there is no object. So we will figure it out whether there is an object or not. But in the second sentence, we can
clearly see an object. She is the doer of an action, that is, she is the subject. Asim is an object. She is the third person, and me is the first person pronoun. Let's talk about another example, another direct speech. Asim said to him why they lost the match. Now, if we talk about the subject, Asim is the subject, him, although it is a pronoun, but it is an object. Why? It is the part of a reporting speech, and they is a third person pronoun, right? अभी हम देखते हैं शी सेज आई लाइक योर पेंटिंग. शी सब्जेक्ट है, ये मैं अब डिटेल में आपको नहीं बता रहा, ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ. आई एम श्योर आपको समझ आ गई होगी. आगे हम सीखेंगे कि अब आपने प्रोनाउंस को चेंज कैसे करना है, लेकिन अभी तक आपको इस काबिल हो जाना चाहिए कि आपको ये पता चल जाए कि जो रिपोर्टिंग स्पीच होती है उसमें हमने सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को देखना होता है, और रिपोर्टेड स्पीच में आपने प्रोनाउंस को देखना होता है, और एट द एंड चेंज रिपोर्टेड स्पीच में आएगा, रिपोर्टेड स्पीच के प्रोनाउंस में आएगा, और वो रिपोर्टेड स्पीच का जो रिपोर्ट स्पीच में जो प्रोनाउंस हैं वो चेंज हम रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को देख के करेंगे. अब ये कहने में मुश्किल लगता है, बट इट इज़ वेरी मच ईजी, आई प्रॉमिस. Okay ji, now we are about to learn an easy way, or rather a trick to efficiently deal with the change of pronouns. I'm sure you are able to see a table in which I have shown a reporting speech and a reported speech. What is a reporting speech? For example, Ali says to Aisha or Alia, reported speech, which is inside the inverted commas, I'm your friend, and SON is mentioned, which refers to the subject, object, and noun. No, it is not a noun, it means no change. And first person will be changed according to the subject of the reporting speech. The second person in the reported speech will be changed as per object of the reporting speech, and we will not change the third person of the reported speech. देखें जी, ये सन फार्मूला है, SON, सन फार्मूला. नॉर्मली प्रोनाउंस जो हैं बहुत सारे बच्चे वो कहते हैं ना, कॉमन सेंस में भी कॉमन सेंस यूज़ करके वो चेंज कर लेते हैं. तो अगर तो आप कॉमन सेंस से कर सकते हो तो बहुत ही अच्छी बात है, बट कभी कभार कुछ टेक्निकलिटीज़ आ जाती हैं जिसमें थोड़ी सी गड़बड़ होने का चांस होता है. सो कॉमन सेंस इज़ ऑलवेज अप्रिशिएटेड, लेकिन जब कहीं आप स्टक हो जाओ तो एक इजी सा फॉर्मूला है, इट इज़ कॉल्ड सन फार्मूला. सन फार्मूला में S का मतलब सब्जेक्ट, O का मतलब ऑब्जेक्ट, N मीन्स नो चेंज. एरोज आपको बता रहे हैं कि फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन S से रिलेटेड है, सेकंड पर्सन O से रिलेटेड है, और थर्ड पर्सन N से रिलेटेड है, जिसका मतलब सिर्फ ये होगा कि जो रिपोर्टेड स्पीच का फर्स्ट पर्सन है वो रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट के लिहाज से चेंज होगा. देखें, लिखा हुआ है अली सेज टू आलिया. Ali is the doer of an action. Ali is the subject. अच्छा जी, I am your friend. अब आप देखो कि I is the first person. ठीक हो गया. So हमें पता है कि first person will be changed according to the subject of the reporting speech. So Ali says to Aisha, I am your friend. ये क्या हो जाएगा? आप guess कर सकते हो? ये हो जाएगा Ali says to Aisha that. अब आप देखो, pronoun for Ali, subject is Ali ना, so one S, first person will be changed according to the subject. So I की जगह Ali, in place of Ali we will use he, and he के साथ am तो नहीं आएगा, he is. अच्छा, अब आप ये देखो, your is a second person, so second person जो है वो किसके लिहाज से चेंज होगा? वो ऑब्जेक्ट के लिहाज से चेंज होगा. सो who is an object? Alia is an object. ठीक है जी. So Ali says to Aisha that he is. अब she तो आ नहीं सकता, her आ जाएगा, है ना? Ali says to Aisha that he is her friend. आई एम श्योर कि आपको समझ आ गई होगी. अगर यहाँ पे होता अली सेज टू आयशा ही इज़ योर फ्रेंड, सो ही बीइंग थर्ड पर्सन इट विल नॉट बी चेंज्ड. वी विल जस्ट remove the inverted commas and put that's it, and we will narrate it in this way that Ali says to Aisha that he is her friend. क्योंकि आयशा मैंने लिख दिया,
इट इज़ आलिया। चलें जी, आलिया है या आयशा है, वी आर टॉकिंग अबाउट अ फीमेल जेंडर, वो तो क्लियर हो गई बात। अच्छा जी, यहाँ पे मैंने आपकी आसानी के लिए दोबारा थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन दूंगा कि कैसे आपने चेंज करना है। हमें ये बात तो पता है कि जो भी हमने प्रोनाउन का चेंज लाना होता है वो रिपोर्टेड स्पीच में लाना होता है, ना कि रिपोर्टिंग स्पीच में। रिपोर्टिंग स्पीच में जस्ट हमने सब्जेक्ट को देखना होता है और ऑब्जेक्ट को फाइंड आउट करना होता है। और अभी मैंने आपको बताया भी था कि इफ़ देयर इज़ नो ऑब्जेक्ट इट मीन्स दैट अ पर्सन इज़ रेफरिंग टू द फर्स्ट पर्सन। वो मैं अभी दोबारा क्लियर भी कर दूंगा। अच्छा, आपने सबसे पहले डायरेक्ट स्पीच को देखना है और डायरेक्ट स्पीच में जो रिपोर्टेड स्पीच है उसमें आपने सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को फिगर आउट करने के बाद रिपोर्टेड स्पीच में देखना है जी कितने प्रोनाउंस हैं, और उसके बाद आपने देखना है कि वेदर दैट प्रोनाउन इज अ फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। और उसके बाद आपने ये फार्मूला अगर आपको ये याद है तो इजी हो जाएगा। द बेस्ट वे टू मेमोराइज दिस फार्मूला इज फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट, थर्ड पर्सन नाउन। फर्स्ट की जगह वन कह दो, 1s 2o 3n। ये 4 to 5 टाइम्स जब आप कहोगे तो आपको मेमोराइज हो जाएगा 1s 2o 3n। 1s means that the first person of the reported speech will be changed as per the subject of the reporting speech। जो second person है reported speech का वो object of the reporting के लिहाज से change होगा, और third person जो आपका reported speech का है वो change नहीं होगा। It will not changed, it will not be changed। अब आप देखो, एक दो दफ़ा इसको जब आप मेमोराइज करो, एक दफ़ा बोलोगे आपको मेमोराइज हो जाएगा 1s 2o 3n। Now let's have a look on the examples। 1s मतलब first person will be changed as per subject। So कुछ examples देख लेते हैं। Asim says to Aisha, I am going to Lahore। Okay जी, let's point out, let's find out who is the doer of an action। Asim is the doer of an action, so he is the subject and Aisha is the object. Now how many pronouns are there in the reported speech? There is just one pronoun and I is the first person pronoun, right? So 1s 2o and 3n, यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लगेगा? 1s है ना। So first person will be changed in accordance with the subject। So क्या हो जाएगा? Asim says to Aisha that he is going to Lahore। Easy हो गया। Now let's talk about the second sentence। अगर इसी sentence में मैं I am going to Lahore की जगह you are going to Lahore कर दूं, Asim says to Aisha, comma, inverted commas, you are going to Lahore। Reported speech, sorry, reporting speech is Sam। Uh, Asim is the doer of an action and object is Aisha, but the pronoun has been changed. Now we are talking about, we are dealing with the second person pronoun, and 1s, 2o, 3n, so 2 will be changed in accordance with the object of the reporting speech। So Asim says to Aisha that Aisha is going to Lahore। अब देखें, in place of Aisha हम क्या यूज करेंगे? She यूज करेंगे। So Asim says to Aisha that she is going to Lahore। It is very much easy। Now let's talk about the third person pronoun which will not be changed, है ना? We will not change the third person pronoun। If I say Asim says to Aisha he is going to Lahore, देखें मैंने एक ही example ली ताकि आप just for your better understanding। Asim says to Aisha, Asim is the subject, Aisha is an object, he is going to Lahore। We know that he is neither a first person nor a second person, he is the third person male, so it won't be changed। We will not change the third person क्योंकि हमें पता है 1s 2o 3n, so 3n, n means no change। So अब इसको हमने नरेट कैसे करना है? Asim says to Aisha, we will just put that instead of inverted commas, that's it। Asim says to Aisha that he is going to Lahore। Okay ji, let's take another example। If I say Asim says I am taking tea and Asim says you are taking tea, now what is the difference in these two sentences? Minute सा difference है, ज़्यादा difference तो नहीं है, but let's spot the subject। Where is the subject? Asim। Asim is the subject over here, ऐसा ही है जी। So
आसिम हो गया सब्जेक्ट। अच्छा, यहाँ पे भी आसिम हो गया सब्जेक्ट। आई एम टेकिंग टी, यू आर टेकिंग टी, देर इज अ डिफरेंस इन द रिपोर्टेड स्पीच। अच्छा, आसिम सेज आई एम टेकिंग टी, आसिम सेज टू whom, है ना? देर इज नो ऑब्जेक्ट, है ना? इट सीम्स दैट देर इज नो ऑब्जेक्ट, सो whenever you feel that there is no object, you will assume that Asim says to first person, राइट? लेकिन यहाँ पे हमें ऑब्जेक्ट की ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि हम बात कर रहे हैं फर्स्ट पर्सन की, तो फर्स्ट पर्सन तो सब्जेक्ट के लिहाज से चेंज होता है। सो आसिम सेज आई एम टेकिंग टी, बहुत इजी हो गया, आसिम सेज दैट ही इज टेकिंग टी। बट अगर हम यहाँ पे आई की जगह यू सेकेंड पर्सन को यूज कर लेते हैं, सो सेकेंड पर्सन 1s 2o 3n, सो सेकेंड पर्सन विल बी चेंज्ड इन अकॉर्डेंस विद द object of the reporting speech. But in reporting speech, there is just subject. We cannot see an object over here. So I just have told you, whenever you are dealing with such sentences in which you cannot see an object, it means that you will assume that that particular subject says to the first person. He says, yeah, Asim says to me. Acha, there is no need to write to me in your examination, but you will just consider, you will just assume that Asim says to me. सही हो गया. So Asim says you are taking tea. Actually Asim says to first person. आपने इसको इस तरह assume करना है. Now how to change this direct speech? Asim says you are taking tea. Asim says that I am taking tea. ठीक है जी, क्योंकि we just have assumed that Asim says to whom? Asim says to first person. So मैंने आपकी आसानी के लिए यहाँ पे लिख भी दिया क्योंकि ऐसे सेंटेंसेस आ जाते हैं जिसमें ऑब्जेक्ट रिपोर्टिंग स्पीच में डायरेक्टली मेंशन नहीं होता. सो उसमें ये जस्ट अजम्पशन है, ठीक है, कि आप इजी हो जाएगा आपके लिए नरेट करना कि जब ऑब्जेक्ट डायरेक्टली मेंशन ना हो, आपको नज़र ना आए, आपको समझ ना आए, जस्ट सब्जेक्ट हो और वर्ब हो, ऑब्जेक्ट ना हो, तो आप कंसिडर करो कि Asim says to first person. If there is no object in the reporting speech, then it is better to assume that the object is the first person. That is, Asim says to me. Okay ji, let's have a glimpse on some other examples for your better understanding. I think it is better to pause the video and change these direct speeches into an indirect speech and then assess yourselves. Okay ji, sentence number 1. Asim says to Aisha, we will go to Lahore. Then Aisha says to Asim, I'm fully prepared for the test. Asim says to Aisha, I'm fully prepared for the test. So what is the difference? We will find it out. And then they say to her, we will keep an eye on you. Okay ji, let's talk about the first sentence. Where is the reporting speech? Asim says to Aisha, it is the reporting speech. As it is a reporting speech, it means that we will figure the subject and the object, right? It is a reporting speech and we do know where is the subject and Aisha is the subject, object. Now let's talk about the reported speech. Reported speech is we will go to Lahore. How many pronouns are there? There is only one pronoun and it is first person plural, first person pronoun. Right, so we know that 1s 2o 3n, first person of the reported speech will be changed in accordance with the subject of the reporting speech. And who is the subject? Asim is the subject. So Asim says to Aisha, we will go to Lahore. Asim says to Aisha that he will go to Lahore. अब देखें, he will go to Lahore होना चाहिए, लेकिन हम यहाँ पे we will go to Lahore, that is first person plural की बात कर रहे हैं. So आसिम का जो in place of आसिम हमने जो pronoun यूज करना था वो he यूज करना था, लेकिन अब क्योंकि बात plural की हो रही है तो in case of plural हम he का plural यानी कि they यूज करेंगे. आसिम says to Aisha, अगर यहाँ पे होता आसिम says to Aisha I shall go to Lahore, तो फिर तो आप सिंपली I की जगह ही लिख देते, लेकिन अब I की जगह V हो गया है, सो we will go आ गया, सो he जो है वो ट्रांसफॉर्म हो जाएगा प्लूरल में, यानी कि he की जगह हमें पता है कि he
एंड शी, दोनों जेंडर्स के लिए जब आप सिंगुलर की बात करेंगे तो मेल जेंडर सिंगुलर ही, फीमेल जेंडर सिंगुलर शी, लेकिन जब मेल एंड फीमेल जेंडर प्लूरल होंगे तो उनके लिए जो प्रोनाउन यूज होता है वो दे होता है। और जब आप देयर भी यूज करते हो जब आप पोजेसिव एडजेक्टिव की बात करोगे या इस तरह, ठीक है, हम देखेंगे उसका क्या यूज है। अच्छा जी, आसिम says to Aisha that they will go to Lahore. Second sentence, Aisha says to Asim, I am fully prepared for the test. अब तो पता चल गया होगा, Aisha is the subject, Asim is an object, I is the pronoun, so it is the first person pronoun and first person will be changed in accordance with Aisha. So in place of Aisha हमने she use करना है। अब क्योंकि I am fully prepared for the test है, I is singular not plural, तो हम इसकी narration कैसे करेंगे इसको indirect speech में? Aisha says to Asim that she is fully prepared for the test। लेकिन अगर वही केस यहाँ पे भी आ जाता है, अगर आप I की जगह we यूज करते तो हम she की जगह they लगा देते और ऑब्वियसली दे के साथ तो आर आता है, इज नहीं आता। अच्छा जी, लेट्स हैव अ ग्लिम्प्स इन अनदर एग्जांपल। आसिम सेज टू आयशा आई एम फुली प्रिपेयर्ड फॉर द टेस्ट। इसमें कुछ डिफरेंस नजर आ रहा है आपको? Yes, although reported speech is same, but there is a difference in the reporting speech. Now, who is the doer of an action? Aisha is not the doer of an action in this sentence. Asim is the doer of an action. ठीक है जी, आसिम भाईजान अब सब्जेक्ट हैं और आयशा जो है वो ऑब्जेक्ट है। सो आई जो है इट विल बी चेंज्ड इनटू ही, एंड अगर आई की जगह प्लूरल वी होता तो हम यहाँ पे दे लगा देते, ऐसे ही है। सो देखते हैं जी, इसको इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करते हैं। यस, आसिम सेज टू आयशा दैट ही इज फुली प्रिपेयर्ड फॉर द टेस्ट। अच्छा जी, now let's talk about another example. They say to her, we will keep an eye on you. थोड़ा सा टफ है but I'm sure आपको समझ आ जाएगा। अच्छा जी, again बार बार बता चुका हूँ, they and her, although they are pronouns, but they is the doer of an action and her is the receiver of an action. They is the subject and her is object. We is first person plural and you is the second person singular. ऐसा ही है जी। अच्छा जी, अब देख लेते हैं जो फर्स्ट पर्सन है वो किसके लिहाज से चेंज होगा? वो सब्जेक्ट के लिहाज से चेंज होगा, 1s, and second person will be changed in accordance with the object which is her. So let's see. They say to her, we will keep an eye on you. They say to her that they will keep an eye on her. अब आपको समझ आ गया कि वी था, प्लूरल था, तो इस वजह से हमने यहाँ पे दे यूज किया। वैसे भी आपका जो सब्जेक्ट है वो भी तो प्लूरल है और यहाँ पे भी प्लूरल आ गया, तो नेचुरल है कि यहाँ पे तो दे ही आएगा। यू है, सिंगुलर है, सो हर इज ऑल्सो सिंगुलर, तो हमने यहाँ पे पार्डन माय ड्राइंग। अच्छा जी, आगे चलते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस, शी सस टू देम आई विल कीप एन आई ऑन यू। अब आप देखो, शी सस टू देम, अब हमारा जो सब्जेक्ट है वो तो सिंगुलर है जी, ठीक है, शी इज सिंगुलर बट और ऑब्जेक्ट इज प्लूरल, ठीक है जी। So how many pronouns are there? There are two pronouns. One is first person and the other one is the second person pronoun. So second person pronoun है, अब second person जो है वो तो object के लिहाज से change होगा and object is plural ही बात है and subject is singular and male female gender. So I जो है वो she के लिहाज से change होगा और you जो है वो them के लिहाज से चेंज होगा। सो लेट्स सी कैसे चेंज होता है। आप पॉज कर सकते हो वीडियो, एक दफ़ा खुद कर लो और उसके बाद देखो कि इसमें हमने कैसे चेंज करना है। शी सेज टू देम आई विल कीप एन आई ऑन यू। शी सेज टू देम दैट शी विल कीप एन आई ऑन देम। ठीक हो गया जी। शी सेज टू देम वी विल कीप एन आई ऑन यू। शी सेज टू देम दैट दे विल कीप एन आई ऑन देम। Acha ji, I think it's enough for today, and we will soon upload the second part of this lecture in which we will discuss the rules of change the tenses of the reported speech.
Until then, Allah Hafiz.